Hey guys, welcome to Unacademy OPSC platform. Good morning to all of you. So in today's session, we're going to discuss on important area in Indian polity. One of the important aspects of Indian polity topics, that is state legislature. Because you know we have union legislature, we have a state legislature. So we have a union government, we have a state government. So our state functions parallel with the center. The state executive legislative functions are in line with, state also functions in line with the center's legislative and executive directions. So as you know, we have a bicameral, we are a federation, we have a basically three tier of government, but originally we have broadly say union and state. The union legislature I have previously, we have seen some important questions, and in this session we will see some of the important questions from state legislature. So before we start, let's have a glance over Unacademy. Unacademy, आपण माने जदि गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर करछंती, then the best and most reliable learning source is Unacademy. Unacademy रे आपण माने सब एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर करि परिबे, घरे बसी के गवर्नमेंट एग्जाम्स ପାଇଁ निज जगह निज स्थान रे बसी के आपण प्रिपेयर करि परिबे. You should have a good connectivity, network आपण ठीक थियो जदि by with the use of laptop or mobile phones you can watch all the live classes. पूरा ऑनलाइन क्लासरूम में रहउची, तो आपण जे कोन स्थान रे क्लास देखि परिबे. तो आपण को क्लास जदि कॉलेज रे पढुचंती आप न पढिबनी बा कॉलेज पढि साला परे जॉइन करबे. देखंतु फिजिकल क्लासरूम रे एक्सक्लूसिवली यू हैव टू बी प्रेजेंट. ऑनलाइन रे आपण कोन काम करि के प्रिपरेशन करि परिबे, जॉब करि के बा कोन पाठ पढि के एकेडमिक कोर्स करके. तो केमिति आपण करिवे Unacademy? फर्स्ट आई हैव टू डाउनलोड Unacademy लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. Unacademy आपण लर्निंग ऐप डाउनलोड करंतु गूगल प्ले स्टोर रो Unacademy लर्निंग ऐप. सो Unacademy लर्निंग ऐप आपण इंस्टॉल कला परे आपण जो एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर करिया पे चाहूँती, यदि OPSC ओडिशा गवर्नमेंट अंडर जे कोन से एग्जाम ପାଇଁ आपण प्रिपेयर करछंती, OS टू नै कि क्लरिकल OSSC और एनी काइंड ऑफ ASO एग्जाम और हो आपनकर OMC CT B.Ed ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स टीचिंग जॉब ପାଇଁ भी. तो Unacademy आपण लर्निंग ऐप इंस्टॉल करी कि आपण गोल सेट करंतु OPSC जदि ओडिशा गवर्नमेंट ପାଇଁ प्रिपेयर करछंती गवर्नमेंट एग्जाम्स ପାଇଁ, तो OPSC सेट कला परे आपण फ्री लाइव क्लास देखि परिबे, अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लास. तो आपण जदि कोड यूज करछंती वैष्णव लाइव, आपण कोड यूज करले आपण को फ्री लाइव क्लास देखि परिबे. अनलॉक करिया पड़े जदि फ्री लाइव क्लास मागे कोड आपण को, देन यू हैव टू यूज दिस कोड वैष्णव लाइव. आपण फ्री क्लास सहित आउ गोटे हमर स्पेशल कैटेगरी अछि जोटा कि प्लस कोर्सेस कहउचंती. तो प्लस कोर्स रे आपण माननको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस सब रहिबो, सिलेबस वाइज बैच कोर्सेस रहिबो. प्रीलिम्स मेंस पाई, ओएस पाई, एएसओ पाई सेमती बैच कोर्सेस रहिछि. सब एग्जाम पाई हमर बैच कोर्सेस रहउछि. तो आपण कोड यूज करिकि सब्सक्रिप्शन ले आपण 10% डिस्काउंट मिलिबो. तो जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती बा जे कोन से एग्जाम में प्रिपेयर करछन, देन स्टार्ट learning from Unacademy. This will help you to get access, okay, to all the courses. तो कहीं के जॉइन करेंगे कौन कौन रही एडवांटेज तापर मु ब्रीफ आपन इंट्रोडक्शन दोची, देन विल स्टार्ट. तो OPSC रे आपण माने जदि जॉइन करूचंती OPSC Unacademy OPSC प्लेटफॉर्म रे, तो आपण को फर्स्ट 30+ आवर्स लाइव सेशन एवरी डे आपण देखि परिबे. आ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस इंग्लिश और ओडिया रे आपण माने देखि परिबे. लेक्चर स्टॉप एजुकेटर आपण पाइबे. न्यू कोर्सेस पब्लिश होची एवरी वीक. ये होची यूनिकनेस कि आम नुआ कोर्स प्रति सप्ताह आणुछु. आपण देखिए बर्तन को कोर्स हम लॉन्च होची. आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द कोर्सेस दैट वी आर लॉन्चिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेस. फीचर्स एंड प्लस रही लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लेसन्स बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स, वीकली क्विज एंड डाउट क्लियरिंग सेशन रहउची. डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर प्रोग्रेस, लाइव टेस्ट आपण क्विज दे परिबे. मॉक टेस्ट सीरीज रही, फाउंडेशन और रिवीजन बैचेस भी रही. तो को एग्जाम में आपण कवर करि परिबे एग्जाम Unacademy रो. OS
ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम सेक्रेटेरिएट हाईकोर्ट एएसओ एग्जाम आप प्रिपेयर करेंगे सिटी B.Ed भी करेंगे OMC PSC प्रिलिम्स एंड मेन भी करेंगे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एग्जाम आपण मैंने अनअकैडमी कोर्स देखिपारे। तो देर आर मेनी प्लस एजुकेटर्स हु आर टीचिंग ऑन प्लस आप जड़े नुह कि 2 जन आप 30 प्लस एजुकेटर प्लस सेशन देखिपारे प्लस क्लासेस। तो बहुत आपन को बेनिफिट मिल भावतु कौन सी इन्यूट जाऊ कले आप फिजिकल इन्यूट 5 जन 10 जन मैक्सिमम पढ़ाऊे तो ये 30 जन 10 जन भी नुहे इवन 5-10 4-5 जन फैकल्टी पढ़ाऊँ गोटे गोटे कोर्स कथा मुझे तो 30 प्लस एजुकेटर आप पढ़ाऊँ से कोर्स तो आप अनलिमिटेड एक्सेस पाइबे कोर्स सहित देखिपारे। देयर आर मेनी प्लस एजुकेटर सब्सक्रिप्शन फी बहुत कम रही 1 मंथ को आपको 1260 3 मंथ्स को 3250 6 मंथ्स रोचे 5040 12 मंथ्स 6300 24 मंथ्स 7560 रोचे 10% ऑफ फॉर ए। तो जस्ट यूज माय रेफरल कोड एंड गेट सब्सक्रिप्शन किंतु ये जो सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट ये 10% एवं जोटा अच्छी दैट विल बी रिड्यूस टू 5%। मार्च 1 रु आपण को अधिका प्राइस देवा पड़ो सब्सक्रिप्शन पाई मार्च 1 रु प्राइस रिविजन होची चेंज होची इनक्रीज होची प्राइस डिस्काउंट कमी जीव आपन को तेणु आपण माने डिले न करिकी खूब शीघ्र जल्दी सब्सक्रिप्शन नहीं जातु अनअकैडमी जो माने सीरियस एस्पिरेंट्स थे माने ही नेबा कथा कारण ये होची आपण को बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ऑलरेडी नोटिफिकेशन इज आउट आपणकर ऑफलाइन तो बहुत कट ऑफ होईची सेमती स्ट्रीम लाइन है स्टार्ट है तापर भी ऑनलाइन आप बहुत कम कॉस्ट रे भी घरे बसिक क्लास देखिपारे करेंगे या कि बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपंपाई ना सो अनअकैडमी आपंपाई ब्लेसिंग्स गोटे इन डिस्गाइज। तो आप भावतु अनअकैडमी लर्निंग आपको यूज करके आप निज ड्रीम फुलफिल करेंगे निजे चाहूबा गवर्नमेंट जॉब रे जॉइन करेंगे जदि भलसे आप पढ़े ट्रस्ट दरकार कमिटमेंट दरकार देन यू कैन सक्सेड। तो एनरोल करेंगे करके आप कोर्स रे प्रिपेयर कले अपन डेफिनेटली यू विल गेट द कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स। सो इजी पेमेंट ऑप्शंस रही आपन चाहिए 1 टाइम पेमेंट सब्सक्रिप्शन नहीं पारे 1 टाइम रे पेमेंट करेंगे और EMI रे आप सब्सक्रिप्शन नहीं पारे आज यू विश। सो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आज ही डाउनलोड कर तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करूँ गूगल प्ले स्टोर आउ OPSC गोल्ड सेट करके अपन क्लास देखु फ्री क्लास देखापी कोड यूज करेंगे आपड़ी अनलॉक मागे कोड यूज करने। सो यू कैन यूज दिस कोड टू गेट एक्सेस टू अनलॉक मेनी फ्री क्लासेस। ता सहित आम रोचे कौन तो ये रहा देखो बहुत बैच कोर्स आम स्टार्ट होची फंडामेंटल कोर्स फॉर एएसओ सेक्रेटेरिएट बैच 15th बैच स्टार्ट होची 18 फेब्रुआरी स्टार्ट ऑलरेडी सारी। तो ये देखो 9 जन एजुकेटर पढ़ाऊँ सब सब्जेक्ट ओडिया लैंग्वेज टू आरंभ करके इंग्लिश टू नहीं कि साइंस इकोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी रीजनिंग मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट रोचे है तापर गोटे सब्सक्रिप्शन आप सब क्लास देखिपारे। डोंट थिंक दैट यू आर टेकिंग माय सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस ओनली माय क्लासेस नो वंस यू आर सब्सक्राइबर ऑफ अनअकैडमी यू कैन एक्सेस ऑल द कोर्सेस फ्रॉम ऑल एजुकेटर्स। दीक्षांत अंडर रे हमारे कंप्लीट कोर्स रोचे RI और बैच 1 जोटा कि 22 फेब्रुआरी स्टार्ट है। सो ये 5 एजुकेटर्स पढ़ाऊँ समीक्षा 20th बैच रे अपन को प्रिलिम्स और मेन्स फाउंडेशन कोर्स जोटी 22 फेब्रुआरी स्टार्ट है बैच रे 4-4-8-3-11 जन एजुकेटर पढ़ाऊँ। अवलोकन रे कंप्लीट कोर्स होचे ऑप्शनल जो ओएस मेन्स ऑप्शनल पार्ट 1 स्टार्ट है 25 फेब्रुआरी स्टार्ट हम जो 3टा सब्जेक्ट स्टार्ट हो फर्स्ट फेज रे पॉलिटिकल साइंस होम साइंस पॉवर्ट। तो प्रगति कंप्लीट बैच कोर्स रोचे एएसओ हाईकोर्ट बैच एएसओ हाईकोर्ट ऑलरेडी नोटिफिकेशन इज आउट से आमर 26 फेब्रुआरी स्टार्ट हो बैच जो 4-4-8-9 जन एजुकेटर पढ़ेबे। सो एते सारा देखंतु आपन को बेनिफिट मिलुची अनअकैडमी केवल अनअकैडमी 10% जो ऑफ अच्छी आपन को ओनली आ रही केते दिन लास्ट फ्यू डेज आ रहा 4 दिन पर सब्सक्रिप्शन फी आपन को अधिका दवा पड़ो डिस्काउंट भी जो 10% आप पाँच से 10% आ रही 5% हो। सो डू जॉइन कहीं जॉइन कर प्लस कथा आपको कहबी देखो जॉइन कर
मेन मोटिव रोची प्लस आमर फीचर्स कौन देखते आपण घरे बस क्लास देखिए लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम फ्रॉम फेवरेट एजुकेटर्स आपण निज एजुकेटर निजे चॉइस करके क्लास देखिपारे आप जो क्लास बुझीपार से क्लास देपारे कारण गोटे सब्जेक्ट को 3 ରୁ 4 5 जन एजुकेटर डील कर बेसी तो कंप्लीट एग्जाम आपण प्रिपरेशन एग्जाम प्रिपेयर करेंगे कंप्लीट कोर्स रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहिबो एग्जॉस्टिव कवरेज रहिबो सिलेबस रो और फ्री टेस्ट सीरीज रहिबो और वीकली फ्री मॉक टेस्ट हो तो ये सब बेनिफिट्स होची। अच्छा आपण फ्री क्लास और लाइव प्लस क्लास भितर डिफरेंस कौन देखो फ्री क्लास रे आपण लिमिटेड सिलेबस कवर हम रैंडम टॉपिक्स आसूची जेमती किंतु प्लस रे आपण कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज आपण कवर करा जिवो एठी आपण लिमिटेड प्रैक्टिस आपण अनलिमिटेड करि परिबेनी माने टेस्ट जो रही किछिटा टेस्ट रहिबो एठी अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होची एटी पीडीएफ नोट आपण जो सब्जेक्ट डील हो सेटाई डाउनलोड करि परिबे किंतु अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपण डाउनलोड करि परिबे डाउट क्लियरिंग सेशन रोची टॉप एजुकेटर एटी रेगुलर रोची एटी रेगुलर नहीं सो ये सब एडवांटेजेस रही अनएकाडेमी जदि आपण मन जॉइन करिवे डेफिनेटली विल श्योरली विल गेट बेनिफिट्स एंड विल गेट सक्सेस। तो आज देखिए स्टेट लेजिस्लेचर पर किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देन विल ओके तो आपण माने जानथिबे स्टेट लेजिस्लेचर हमक जेमति कहली यूनियन रे आपनकर गोटे यूनियन पार्लियामेंट रही यूनियन लेजिस्लेचर स्टेट रे सेमति पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्मेशन होची पैरेलल लेजिस्लेचर रही तो स्टेट लेजिस्लेचर रे सेमति बाइकैमरल अछि यूनिकैमरल अछि किंतु सब स्टेट बाइकैमरल लेजिस्लेचर नाही प्रेजेंटली 6 स्टेट्स अछि बाइकैमरल अर्थ दुईटा हाउस गोटे लोअर हाउस और गोटे अपर हाउस जोटा आम कहते लोकसभा लोअर हाउस यूनियन रे जहाँ कहते आम सेटा को स्टेट रे आम कह लेजिस्लेटिव असेंबली ताको स्टेट रे आम कौन कहते लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन लेवल एटा होची लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट ताको हम कहू लेजिस्लेटिव असेंबली तो जोटा अपर हाउस जोटा अच्छी राज्यसभा कहते सेंटर रे ताको हम एठी कौन कहबा विधान परिषद देखो आउथर मु लिखि जस्ट जोटा लेजिस्लेटिव काउंसिल हम कहते बा राज्यसभा कहते देखो अपर हाउस हम कौन कहते राज्यसभा सेंटर रे यूनियन रे दुईटा हाउस तो स्टेट रे पैरेलल बॉडी कौन रही अपर हाउस जोटा कहूँ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल तामाने स्टेट रे दुईटा अच्छी इंस्टीट्यूशन गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल और गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट रे प्रेजेंटली 6 स्टेट्स इवन आंध्र प्रदेश आल्सो हैज पास्ड द बिल टू स्क्रैप लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके तो क्वेश्चन किसी स्टार्ट करिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज or are not true about creation or abolition of legislative council in the state देखो क्रिएट करो कि ऑपरेशन करे पे कोडा ठीक न तो फर्स्ट ऑप्शन देखो the bill to create a new or abolish an existing legislative council is passed on as an ordinary bill and not a constitutional amendment bill. Yes, it is correct, it is not a constitutional amendment bill. For the purpose of creation, state legislative assembly need to pass a resolution that might have a special majority. Okay. For the purpose of creation or abolition legislative council, the legislative assembly of the state needs to pass resolution to have a simple majority. Okay. Currently there are 6 states. देखो 6 states तो अच्छी आंध्र प्रदेश से भी स्क्रैप करिछि किंतु यूनियन पार्लियामेंट तक पास करिया पड़िबो यूनियन गवर्नमेंट जदि अप्रूव कला परे स्क्रैप हो जिवो तो किंतु तापाई स्टेट रे स्पेशल मेजोरिटी रे पास हबो मोर एकदम स्टेट रे स्पेशल मेजोरिटी रे पास हबो बुझी पाइले कि नहीं जेते बेले आपण कहउचंती पार्लियामेंट जेते अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा को आर्टिकल 169 रोची से कौन कहउची पार्लियामेंट कैन अबोलिश और लेजिस्लेटिव असेंबली और क्रिएट by simple majority. Parliament can create or abolish by simple majority provided if it is passed by the
legislative assembly by special majority. Okay, the legislative assembly ताको special majority रे pass करूची then only it is possible. तो हम legislative assembly कथा कहूची then legislative assembly चाहिए create करि परिबो to can create or abolish and it has to be approved by the union parliament. So we have answer कोन को not true पचाचे तो simple majority टा अछि that is not true आउ सब ठीक अछि सिंपल मेजॉरिटी नॉट ट्रू एटा भूल अछि भूल जेहेतु तेनु ठीक है नॉट पचारछि ट्रू कारण एटा नॉट इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यस इट इज करेक्ट फॉर द पर्पस स्पेशल मेजॉरिटी इट इज आल्सो करेक्ट देयर इज इट इज आल्सो करेक्ट सो इट इज रॉन्ग तो रॉन्ग स्टेटमेंट होतवारु ये होछि करेक्ट हला ओके which among the following states has the smallest legislative assembly in terms of capacity? Smallest कोटा सबुटु केरला नागालैंड गोवा छत्तीसगढ़ सबुटु स्मॉलेस्ट होची गोवा गोवा रे 40 सीट्स अछि गोवा रे केते 40 सीट्स तो गोवा होची स्मॉलेस्ट आपण देखथिबे गोवा रे केते सबुटु कम सीट्स अछि तो ये होची आपनकर थिला नेक्स्ट what is the minimum age of qualification for membership in the legislative council and legislative assembly of the state respectively? Minimum age के दरकार आपण को काउंसिल किंबा असेंबली रे मेंबर हो पाए देखो मिनिमम एज काउंसिल रे केते दरकार काउंसिल रे मेंबर हो पाए मिनिमम एज केते थिया दरकार मिनिमम एज आपण को 30 जोड़ा राज्यसभा यूनियन पार्लियामेंट जोड़ा राज्यसभा एज लिमिट मेंबर हो पाए यार सेंट legislative council is corresponding to the Rajya Sabha at the center corresponds पूरा सेम कुछ पैरेलल चल यूनियन गोटे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन सेमती पैरेलल फंक्शन करूचे लेजिस्लेटिव असेंबली पाई 25 वर्ष जोड़े लोकसभा पाई 25 वर्ष तो ये आंसर who among the following in the state legislature decides whether the bill is money or not तो सेंटर रे यूनियन पार्लियामेंट केस जा पार्लियामेंट के डिसाइड करछन बिल मनी बिल कि नहीं स्पीकर एटी भी स्पीकर डिसाइड करिवे देयर इज नो इश्यूज जे अपन पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर ठीक से बुझछन स्टेट लेजिस्लेचर बुझिबा बहुत सहज हो और मन रखिया किछि डिफिकल्ट हो नाही who among the following in the state legislature decides the disqualification of member of legislative assembly arising on the grounds of defection anti defection यदि डिफेक्शन कौन सी पार्टी चेंज करछि कौन सी पार्टी मेंबर इलेक्शन परे रेला परे ओके तो पार्टी चेंज कला पर दैट इज यूनियन रे की करथि स्पीकर करथि स्टेट रे स्पीकर करिवे द स्टेट लेजिस्लेचर की डिसाइड करिवे डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन स्पीकर ओके व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर Be it state legislature or union legislature, maximum gap between two sessions is always 6 months. So maximum gap between two sessions which is 6 months, provided the minimum the assembly sessions have a minimum at least twice in a year, and provided then obviously minimum twice la mane kon hela maximum gap is the minimum the thara ei paribo 6 months. Yes Asmita, the 6 months gap maximum between two sessions, so at least two sessions we can conduct at least. Suppose the legislative assembly dissolves and suppose a bill is passed by the state legislative assembly and also legislative council at the time of dissolution and waiting governor president's assent, then what happens to bill? The governor ko assent pai padi jaichi bill और लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो जाउछ ताले कोन हो बिल कोन हो बिल कोन हो सुस्मिता आंसर दियो बिल डज नॉट लैप्स बिल काहे लैप्स हो बिल लैप्स हो नहीं कारण बिल इज ऑलरेडी रीच टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर हिज असेंट तो डिजॉल्व हो गली बिल पास हो नहीं बिल पास है लेजिस्लेटिव असेंबली रे and bill pass है कि जाके गवर्नर का सेट पाको पड़े जाए so bill does not lapse. Which article empowers high court to with the power of red jurisdiction? को article high court red jurisdiction पाइन empower कोर्ट option C absolute option C कोटा option C 7 नंबर ना 8 नंबर option C का है क्वेश्चन नंबर
corresponding number question number टा को ऑप्शन सी मैंने कोटा ऑप्शन सी कोटा पूछो 7 नंबर 8 नंबर ऑप्शन सी कोटा 7 नंबर सी नु 7 नंबर होची बिल डज नॉट लैप्स बी मनी बिल हेले भी मनी बिल कैन नॉट रिटर्न टू दैट हाउस किंतु गवर्नर को एक्सीडेंट जे कौन सी बिल नॉर्मल बिल कथा कहूची बिल लैप्स हो कि बिल लैप्स हो नहीं बिल डज नॉट लैप्स इफ इट reaches to the president or it has already it is awaiting governor's the president's assent bill does not lapse जदि बिल पेंडिंग अछि लेजिस्लेटिव असेंबली रे आ हाउस डिजर्व हो जाउछि देन बिल लैप्सेस बुझि पर बिल पेंडिंग अछि लेजिस्लेटिव असेंबली रे आ हाउस इज लैप्सेस द बिल लेजिस्लेटिव असेंबली डिजर्व्स देन इन दैट केस बिल लैप्सेस बुझिला बिल इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली and assembly dissolves in that case bill lapses so already bill has reached to this one which article empowers that governor empowers the high court with power of writ jurisdiction eta कहला 8 नंबर को high court writ jurisdiction को article mention होछ आंसर दे 8 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज एग्जाम जदि पर्यटन अनएकाडेमी फॉलो कर अनएकाडेमी आप पढ़ो अनएकाडेमी आप लर्न करो सब जिन जानि परिबो यूट्यूब जस्ट ए लिमिटेड 20 मिनिट्स डिस्कशन इट्स माने बेसी डिटेल एनालिसिस बा डिस्कशन बा बुझी हो नै जस्ट किछरा जे तुम ऑलरेडी आगु जानितो किछरा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करछन अनएकाडेमी ऊपर बेसिकली अनएकाडेमी रो एसेंस इंपोर्टेंस ऊपर मु कहूची सेति पय कहना सो दैट यू शुड जॉइन अनएकाडेमी एंड आल्सो स्टार्ट लर्निंग तो आंसर दे 8 नंबर 8 नंबर आंसर दे को आर्टिकल कोची आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 कोची रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जोटा कि सुप्रीम कोर्ट रो जुरिसडिक्शन करेस्पोंडिंग होची सुप्रीम कोर्ट रो 32 सुप्रीम कोर्ट रो जोटा सुप्रीम कोर्ट रो 32 बेले जोटा 226 होची हाई कोर्ट ते होची रिट जुरिसडिक्शन फंडामेंटल राइट पावर हेले रिट जुरिसडिक्शन आसी रिट जुरिसडिक्शन okay read jurisdiction article 32 25 next is 32 it nahi se article ka okay susmita whose statement is not correct governor can issue ordinances when the legislative assembly is not in session or only when the two houses are not in session Governor can at his discretion issue the ordinances whether the bill assembly is in session or not. Governor must be satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. The governor's ordinances shall have the same force and effect as an act of legislature. Answer दिया कोटा ठीक नु है, which is not correct. Answer दिला कोटा करेक्ट नु बी गवर्नर ता डिस्क्रिप्शन रे ऑर्डिनेंस इशू करि परिबे नाही वेदर असेंबली इज इन सेशन और नॉट असेंबली सेशन रे थिला बेले ऑर्डिनेंस केमति इशू करिवे व्हेन असेंबली इज नॉट इन सेशन इमरजेंसी अराइजेस then governor issue the ordinances governor issues ordinances or pass ordinance okay promulgate ordinance is temporary law पुणी हाउस रीअसेंबल होला पर ताको पास करे पड़ियो तो ऑर्डिनेंस जदि इस गवर्नर करूछन इशू ये होची असेंबली तळ सेशन रे नाही सेशन रे थिला बेले 9 हबो बी आंसर यस 9 हबो बी एबे ठीक कह जना ना बी आंसर नॉट करेक्ट पचाची तो ना बी इट इज नॉट हिज डिस्क्रिप्शन इट डिपेंड्स ऑन वेदर द हाउस इज इन सेशन और नॉट व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन देन ओनली गवर्नर कैन इशू दैट ऑर्डिनेंस टू गिव इफेक्ट टू एनी लॉ टेम्पररी व्हेन ए बिल passed by the state legislature attempts to take away the powers of high court
and is presented before the governor for his assent, he dash. जितेबाला गोटे बिल पास होची स्टेट लेजिस्लेचर पास करुची जोटा एक हाई कोर्ट रो पावर को अफेक्ट करुची which affects the power of high court, which abridges the power of high court, which takes away the power of high court, and if it is presented before the governor for his assent, then what governor will do? Then what governor will do? Governor is bound to reserve the bill for the consideration of the president. Governor is a type of bill रे governor reserve करिवे president का consent पाए because it takes the power of high court. Or any federal provision is affected, constitutional provision is affected, then in those bills governor can reserve for the consideration of the president. On Article 213, governor of state is empowered to देखो 1, 2, 3 है ना president करो 213 कौन हो ता corresponding article D कोटा कोई D कोटा D होची 10 नंबर D 11 नंबर आंसर दियो 11 नंबर आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ when governor of state is empowered to 1, 2, 3 while corresponding है 2, 2, 1, 3 1, 2, 3 corresponding और 2, 1, 3 आंसर दिया 10C 10C नहीं 10D 10 which is C no 10D सुस्मिता 11C भी नहीं 10 which is D okay. This is bound to reserve the bill for the consideration of president. 11 कौन हो 213 कथा जी कोचो governor is empowered to take 1, 2, 3 president governor होचे 213 ordinance 11 होची B 213 टा कौन 11 होची B एगार होची कौन बी promulgate ordinances during the recess of legislature बुझेला तो which of the statement is not correct council of ministers collect responsibility to the governor प्रथम स्टेटमेंट जो देखियो it is not correct और सब ठीक थिबो कारण council of ministers is not collectively responsible to the governor they may be individually responsible. They are responsible to the legislature, state legislature or lower house. Executive is always responsible to the legislature. Collective responsible to the lower house, legislature, not governor. They are individually responsible to the governor but collectively responsible to the legislature. तो इटा प्रथम रूप देखिला ये भूल. ये statement हवा ठीक आंसर. इटा भूल not correct पचार ची तेनु ठीक है ला. Don't think that इटा ठीक statement. सुनो. बुझिपारछ not correct पचारछि तो it is not correct so it is the answer so governor को ये legislature प्रति responsible है council of ministers is collectively responsible to the legislature lower house governor में they are individually responsible to the governor state रे union पर legislature council of ministers is collectively responsible to the union legislature parliament that is Lok Sabha individual responsible to the president union state सेमती parallel कोई parallel कम चली जी functions तो आप सब ठीक BH ठीक CH ठीक DH ठीक options ओके तो ये तो आपन का आज रो डिस्कशन किसीटा क्वेश्चंस 12टा क्वेश्चंस हम से देखिले तो like this we are solving important questions in every sessions in a YouTube session but I will recommend you to join Unacademy learning of and join Unacademy courses Unacademy आपण आप इंस्टॉल करके कोर्स देखंतु जदी सीरियसली पढुचंती बा डिटेल्स कोर्स जानिया पय चाहउचंती YouTube रे आपण डिटेल एनालिसिस करि परिबे नाही लाइव इंटरेक्शन देहि परिबो नाही किंतु आपण Unacademy आप इंस्टॉल करके फ्री लाइव क्लास देखंतु ता सहित प्लस रे जॉइन करंतु आई हैव शेयर्ड द कोड मे कोड आपण यूज करके फ्री क्लास देखंतु फर्स्ट आप डाउनलोड करिक ओके सो लाइक थैंक यू
थैंक यू ऑल, विश ऑल द बेस्ट। सो जो मैंने वीडियो देखते लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु फॉर फर्दर अपडेट्स पाई। अनएकाडेमी आप इंस्टॉल करके क्लास देखंतु। आउ जदि प्लस रे आपण जॉइन करे पाई चाहउछन प्लस रे भी जॉइन करंतु, बिकॉज़ टाइम इज वेरी हाई। मार्च 1 रु आपण प्लस सब्सक्रिप्शन फी बढ़ी जाई पारे, बढ़ी जीवार अछि, बढ़ी जीवो ऑलरेडी चाहि पारे न, ऑलरेडी बढ़ी जीवा पाई फिक्स देखंतु। मार्च 1 रु आपण ऑलरेडी फ्री रिवीजन हो जाउछ। आउ देखो फ्री क्लास आउ प्लस क्लास भीतर डिफरेंस आप देखी पारे है। मार्च 1 आम प्राइस बढ़ी। सो चूज टू जॉइन, जो मैंने जॉइन करने चाहते जॉइन कर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।